Hey everyone, welcome to another episode of the Nameless Comics Podcast. Today we have a very special guest joining us today. This is a person who has been in the comic book industry for over 20 years and has given amazing hits and titles. His graphic novel has also inspired a brand web series as well. By now you guys would have probably guessed it. It's none other than Shamik Dasgupta, who has given some amazing works to us in the form of Ramayan 3392 AD, The Sadhu, Taranath Tantrik, The City of Sorrows, Mrityubhumi Deadland Saga, and of course The Village. We're so glad that he was able to join us this time for a podcast, and I have to say this has been one of the most fun and free-flowing conversations that we have had, that has gone on as smoothly as we wanted to, and also somehow covered every topic that we wanted to discuss about. If you want to check out the other podcasts that we have done, I have a playlist on my channel. You can go and check out over there. I will keep the links to all of our channels in the description below. You can subscribe to our channel to stay tuned for more such podcasts and episodes, guys. So without further ado, let's get into the discussion. So it's great to have you here with all of us here today because all of us are familiar with your work and comic books, and yeah, we're glad to have you here. And also, you've been here in this industry for like more than 2 decades now. And Yeah, I remember you were talking that at the start you got one of the big breaks, along with what could possibly be one of the biggest launches for an Indian comic book over here, and that was with Ramayan 3392 AD, which I love. I love the whole series. I've read it, and there's been numerous discussions on that. But what pulled my eye to this was obviously this amazing Alex Ross cover. It's a beautiful, beautiful Alex Ross cover, and I think it's one of his best outside of superhero yeah. works. If I get the chance No, to even ever meet even if him, even if you even if you consider his superhero works also, everything, I think this is one of his best work, in fact. yeah. Definitely, if I ever get the opportunity to meet him, this is what I would get signed. And also, the cool thing is, in this particular single issue copy, there's also a poster inside it, like how they used Yeah. to do with the Gotham comics back then. So, is the same Shamik cover Da, poster? by the way, I visited Shamik Da's place while he was at Kolkata, and in his Kolkata residence, there is a literal statue, a figurine of this particular cover in this particular pose. ए भाई वो टूट गया है यार, वो बहुत उसका हाँ हालत टूट बहुत गया. खराब हो गया. मैं भी कोशिश किया था जोड़ने का, बट पॉसिबल नहीं हो पाया. It was very sad, like the problem was I kept the statue in mint condition for a long time. Then one Mm. day Hmm. suddenly because we shifted, because in Calcutta also we shifted from one place, like 2019 we shifted house. So during that shifting it got broke, like Mm, what to say. But you a never know, maybe huge Sando collector loss. could decide to make a reimagining and make a more accurate, bigger scale version of this someday. Who will make यार अभी वो जमाने में वो निकला था, and it was I think it was made around 100 pieces were made. तो वो Okay. अभी sold out हो गया है. और one of my friend has got a copy. One of my he lives in Calcutta only. So he's a statue. He's all this. He's a collector of that. So he got one of the, and it is in mint condition in his place. So what I wanted to ask was like when this launch was happening, like I said, it was like a very big launch because you have a lot of good creative teams that was coming in for this launch, and then you have Alex Ross making this cover. Like, did you like personally ever interact with Alex Ross because on to like conceptualize how the cover should look like or what you're trying to represent with this cover? No, actually, like it was mostly done. Like I think the cover was there were some sketches and costume ideas sent by Abhishek Singh. Okay. So because in our story, Lord Ram has got a certain kind of an armor, certain kind of a attire. So Abhishek, he had sent some sketches of that color scheme and everything, and the rest he did on his own and sent it. First he sent the basic sketch, and then he sent the full painted cover. So I couldn't believe it. The day they showed me the mail and I saw the picture, I was blown away, man. It was Yeah. it was any comic book nerd's wet dream. I recently got hold of this trade paperback. I was at Flora Fountain, and usually, there are those single issues, Indrajal comics and stuff like that. You never actually get trade paperbacks. But I saw this and I picked it up. Later on in the evening, when I came home, I was pleasantly surprised because this book actually had the signature from Deepak Chopra, and Oh, it has got signature from like three more people here.
and I think all of them have like worked on this comic. I think your signature is Who, not there, right? who is that? One second, just hold it a little I closer. think that there's one is Jeevan Kang, which I Jeevan could Khan. recognize. There Ah, is Yeah, another which is Satish Tayade, yeah, and the Satish third one Tade I'm not able to. yeah, okay. It's mostly the artist, I think. Yeah. Yeah. So whenever I meet you next, I want your signature also on this, so it kind of completes my uh, Yeah. super lucky find. You Yeah. both are at Mumbai, A lot of good so people worked on possibility this to series, have. man. You are in Mumbai only, right? Yeah, I mean, Great. So, and if you are going to be there at Mumbai Comic Con, then yes. नहीं मुंबई कॉमिक कॉन के टाइम में कलकत्ता रहूंगा एक्चुअली लाइक आई विल बी Oh, बिकॉज okay. I couldn't go this time because like I was supposed to go to Calcutta for my vote casting but Right. मेरा कुछ I had a surgery in my eye. Okay. कॉमिक कॉन में मैं आजकल ज्यादा जाता भी नहीं हूँ एक्चुअली यू नो लाइक we I don't feel like going there anymore. There are some reasons behind it. Manish knows that, but yeah. Okay. mm, See, we won't dwell on that on this podcast right now. Maybe mm, afterwards we can speak about it. yeah. Yeah. Sure. By the way, SK, I got your copy. Whenever you decide to return back to India, I'll send it. This is yours. That will mostly be post September only, but yeah, great. That time I'll correct the other two volumes also. And also bring some stuff for Good us to see from. that this book is still there, you know, like still people are finding this book somewhere or the other. It's still there, Oh, you and know, like loving it. I have and Not just read finding, we're loving it. I mean, the kind of art which is there, the storytelling by you, it's mesmerizing and it's still enjoyable. The way it has been, thought through. I think we were having a conversation earlier about will we see the book finished? because I recently reviewed this book on my channel. That was the same thing because I had just read the whole series then, and that's become like a common topic in my most common recent videos because I'm reviewing Graphic India and other Indian comic books that have good potential, but again died down due to whatever reasons, which is very disappointing. the story ended right before the reveal of Hanuman. Mhm. So and I think Manish has seen some pages, you know, like after that I've shown you. So Yeah. मैं तेरे को दिखाया था when you came to my I sent you also maybe. So थर्ड वॉल्यूम के बाद भी थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ा था. दो थोड़ा दो नहीं, काफी दो बढ़ा. issues बना था उसके बाद. मतलब थर्ड सीजन वाज ऑलमोस्ट ओवर. तो Mm. थर्ड सीजन कंप्लीट हो गया था. फोर्थ सीजन कभी चालू इसलिए नहीं हुआ. इसलिए 3 ही वॉल्यूम आया है, but that encompasses what about 40-50% of Ramayan, if not less. There were Yeah, around 16 issues in total. yeah. Almost half of the story was left to be told. So this is Mm. half Ramayan. Is very sad again because I have another thing. It's not again a work that you have done, but I was just talking about it with Dr. Manish recently. This is Avatar X again from Graphic India. This is like Ah, one of the again very rare works because I was trying to track this down so hard. I was finding other single issues of the other titles. This was almost impossible to find. Again, very good, idealizing, good idea, good plot, everything, but 4 issues and it's done. It didn't go beyond that, which the is sad story because ended or did it like continuing story? they leave you at a cliffhanger because the origin story was covered in the first 2 issues, and then in the other 2 issues they start. Actually, it had a really good idea because it was not rushed. Ki hum pura ek arc 2 issue mein cover kar lete hain. The character realizes what his mission is. He's changed and all that. It was like leading up to more issues, but that's it. It ended with 4 issues. But the paper quality, there are so many different variant covers. They've done the whole thing, like what Marvel DC does. They've done the whole thought process and it, but then that's it. 4 issues and it got over. और उसका भी print count is like probably in like thousands. That's all. वो ग्राफिक इंडिया का तो यही प्रॉब्लम रह गया है ना. They did a such they started such good stuff but they could not follow up with that. Like Yeah. बीच में इतना Yeah. बंद हो गया. रिवोल्यूशनरी आइडियाज लाए, एग्जीक्यूट भी किए, बट कमिटमेंट के साथ लंबा रेस का घोड़ा नहीं बन पाए. दे केप्ट ऑन ट्राइंग एंड देन सडनली दे जस्ट गिव अप. Yeah. True. अभी अभी उन they लोगों का कुछ खबर है क्या? What are they doing? They were doing some animation if I remember that. Yeah. They वो तो did कुछ that बाहुबली का एनिमेशन Veer बनाया. Hanuman.
Yeah, Hanuman Legendary. yeah, Manan. they too, Hanuman. Yes. I think that's been a super hit for them because Yeah. I think 3 or 4 seasons have already happened, and the kind of art which they've used there is quite good. So people are always looking forward to more of it. The background score is nice. The voice acting talent also which they've got is also pretty top notch. It's doing well. I think it's on Geo Hotstar. They might again reinitiate their Bahubali stuff because abhi wo aa raha hai na Bahubali the Eternal War. For promotion, of Hmm. course, because they're tied with Graphic India, they might put something out. But I don't think more than that they might continue. But I told Dr. Manish, I like their concept of Shadow Tiger, Devi, and Invincible. These all the for me like as a consumer speaking here, I have ideas that it can go on for 100 issues like Invincible. They had a very good team, but yeah, it never Hey, materialized. did you know? I think there was this title called The Sadhu that also written by Shamik Da, I guess, the retailing part, right? No, So, I wrote the third season, I guess. mhm. I think 2 or 3 issues came out. I think the final issues didn't come. Yeah, and the biggest story that no one knows about is the fact that this IP was so seriously being made that Nicolas Cage was supposed to play the role of the Sadhu, and a movie was supposed to be made, and Yes, then yes, everything got scrapped off. yeah, So that grand scale of plans were there, but execution धरे का धरे रह Hmm. गया. exactly. Maybe in the future, you never बहुत know. सारी चीजों का मूवी बनने का बात हुई थी. Even Ramayan 9 to 80, they sold the Hmm. movie rights for that. There was a Okay. comic called The Virulence, which was supposed to be made into a movie. वो कुछ नहीं बना. कंपनी टिकेगा तब तो मूवी बनेगा ना. द रक्षक का भी तो प्लान्स हुआ था, बट थैंकफुली द विलेज गॉट इट्स अडेप्टेशन. विलेज हो गया. रक्षक जैस का तो पता नहीं जैसा क्या भी होने था. वाला. I have very recently been introduced to your work because only last year when I connected with both of them, then Dr. Mani suggested, read Taranath Tantrik. It's really good. So I was like, fine. I that was the first book that I reached out to, and also I got it and I read all the 4 issues. And it's good. I told Dr. Manish like this is not my genre. I got a little spooked out after reading the genre, so it's that's Hmm. maybe not my area. But I enjoyed the book as a reader. The artwork was good, the story was good, and I was like, I wish we had more time with those characters because their friendship dynamic was nice. What these characters they shared with each other. So I wanted to see more about that. And I was seeing that in 4 issues, how you have described Kolkata in this first Yeah. issue. That only a person who's born and brought up and knows their city can explain all Yeah. of that. I'm from Yeah. Bangalore, so I could probably explain what I like about Bangalore and what makes Bangalore Bangalore. So that was evident in those 4 issues. So that's what I immediately clicked with that book. Yeah, that was also very fun to work on. It's one of my most favorite titles. Like the ones that I've written. It is, in fact, more close to my heart than Ramayan, you can say, because I love the character. And, something about the story, when I look back and I see that book, I feel proud about it. I don't feel regret. When I see Ramayan, I feel regret. I feel regret in the sense like we couldn't finish it. But at least this one is finished. No, this book is Right. Yeah. complete. We could have we could have expanded the adventures or whatever, but didn't happen for some reasons. But at least we finished this story. Right. And I don't know, there was somebody was asking me like if we buy the rights and do some. I thought that I got a little cold feet because I thought that can I top this story? Can I or write something maybe at par of this? Because people liked it very much because it was very fresh that time. Mm. This occult True. detective and this and that, and the Calcutta setup and everything. So it was very fresh that time. But now a lot of people are doing these things, especially in Calcutta and Bengali literature. There's so much of that stuff if you'll see. So ours was the first time, but now I when I look back and I think that if I have to write a second story, I had started a second story on this. I never completed it, but I always thought that maybe I can't top this one. So Mm. that had always been some sort of a handicap, you can say, to write season 2 of Taranath Tantrik. I mean, if you decide to connect it with any of your other titles, then it will have a kind of a brand or
shared universe kind of value that at least for the to kick things off, people will pick it from there, and then once the story goes on, it can go on individually. शेयर्ड यूनिवर्स का प्रॉब्लम यही रहता है कि you can't actually create a shared universe until The like IPs your are under the publisher same decides to umbrella. do that. Your publisher has to be very sure that he wants to make a shared universe. Because in Yali Dream Creations also, when we made Rakshak, later when they were making Codename Alpha, they were thinking of having a shared universe. But Yeah. it never worked out. Like it's very tough. Mm. Like until and unless you have got big money behind you, or you have someone who is very, like very determined that I want to have a shared universe, like say like Holy Cow, they have a shared universe. They Right. had Yeah. this idea from the beginning only that we will have Mm-hmm. a shared universe. Hmm. So that's why they created this universe, whatever it's universe, whatever you call it. But there is Right. there is a little problem drawback about shared universe also, because that limits uh, your your uh, your horizon of storytellings. Like at the end of the day, you will always think, okay, I have to connect this, I have to connect that, and whatever. But if you're writing an independent story, you don't have to connect it with anything. So you can go free on it as you want. Yeah. There By the is way, if you no, remember, Rakshak has a shared universe with a village, I guess. yeah, a Mm. small, a very small part. Reference. They mentioned there's reference of village. You were talking about like Village finally got its successful adaptation, at least out of all the other projects. But for you're a comic book creator, right? You wrote it and then it transitioned into a movie or a series. Like, what was that difference like, or what was that journey like in the first place when it finally materialized? Journey in the sense like the village. The Village, yeah. The village was actually we had just finished the series called the Caravan. Okay, Mm. the first book Hmm. was complete, Yeah. and then I did a historical adaptation called Devi Chodhrani, and then so my publisher Asin was asking me what to do next. Mm. Hmm. So, well, there is a story that like it's already written in the book. I guess you have read it. So Mm. there was a friend of mine with whom during my college years I used to discuss a lot about like these characters, comic books, ideas, and everything. Like daydreaming, two kids daydreaming. So at that time we read this story called One for the Road by Stephen King, and we loved the story, and he actually suggested that like if we take that story and put it on an Indian context, maybe setting it Hmm. somewhere, like Ladakh or Dehradun or somewhere like that, some a little remote place, and there are vampires in the story. So so we were Mm. having all these discussions that time. So then when Aswin asked me, so then I said that I remember that story, but we had already done Mm. vampires with the Caravan. So I thought that, hey, what next? What next? What other monster can we explore? So then I'd seen this movie called The Hills of Eyes. Hmm. Yeah. So there were mutants over there. Like people who had been who got mutated by this radiation fallout, and Right. so that idea it struck me, and like I brought these two things together. I set the story in South in Tamil Nadu, Mm. and yeah, that's how it started. But then I started thinking how to root it in India. Like because if you read Village, it's a very rooted story. So Mm. True. then we thought about like this caste system that is prevailing in the rural parts of India, and like tribals versus the upper caste and everything. And that was the major, like you can say, anchor of the story. So yeah, that's how I started writing it, and actually I wrote it for a like if you have read the book, it reads more like a film. It doesn't read like Mm. a series as per se. Right. But Hmm. Amazon Prime they wanted to make a series for that, and Mm. the director Milind Rao he also wanted to make it as a series. But the story didn't have that much meat to be made into a series. But then I was not
the thing was, I was actually that time I was involved in another project, like a very big project. That also is in the doldrums right now. So I couldn't, whatever they were doing, I was not very inquisitive about it. What they were doing, because I was not assigned by Amazon Prime to write the script. I could have Right. got myself assigned, because that I obviously I had the right to do so, but at that time I didn't only think about it. So whatever the papers they sent me, I just signed on that and just wanted to get it out of my way, like to work on that other project, Right. other film project. So yeah, it was my. I can also say it was something that I missed out also. They wrote the story, but the story was, if you have read, if you've seen the series, it's not like the graphic novel. It's completely different. Hmm. Like the opening starts the same, but then it goes to a very different direction altogether. Right. And the very crux of the story was changed. The conflict Okay. was totally different in the series. So at the end of the day, and it was not very well made also. Like, look, the guy, the director, he tried, but like maybe like I don't know what went wrong. Like You said that, the story was essentially made for a graphic novel. You could have turned it into a film. But to yeah. stretch it for a show with, episodes more than six, seven, of course, then there is no meat. So, yeah. And also the Pro main thing which actually The disappointed me was essence. the essence, the main core of the story was changed. Yeah. Right. So like that was quite disappointing for me. Like the way it started, it was exactly like graphic novel to screen kind of an adaptation. It starts off Hmm. exactly the same way that, and I was so happy watching it. And then suddenly everything Yeah. starts changing. So like I didn't mind including those mercenaries and everything. That they always work. So like, but the way the whole conflict was changed in the story. So Hmm. that was something Yeah. which I didn't like. They tried to do In too fact, many this, things. I yeah. mean, they tried to do too many things. My story Hmm. was contained, self-contained. It was, if you make a True. 2-hour film, that's perfect. They Yeah. made it into like a 6, 7 episodes, and like some superpower was included. Anyway, let's not talk about it. Again, Yeah. the I core take solace was that in the I graphic take novel. solace that yeah, it was the first graphic novel to be adapted into live action. So that's Correct. all. So I this was the first book of yours which I read, and then after this book I picked up TNT because Dr. Manish recommended. Then I read Caravan. Then I read your other books. But this book was something which I really loved. The graphic novel Village is a great standalone book in itself, and it has a message, which was something which I really liked. That the art was great, the story was good, but there was a message to the whole thing, and Yeah. that as a reader was satisfying. Yeah, you can ask any Indian comic book reader what are one of his top five or top three favorite Indian horror self-contained stories. The name of the village is going to be there. True. I'm trying to actually top that right now with there's another series that Mrityubhumi. I'm writing called Mrityubhumi. Yeah. So I think that but it's a long series, like we have big plans for that. So we Okay. just finished the first season, and first it came out in Bengali, but now the English is like the English version is all it's almost completed. So I believe in the next month or so it will be the whole first 5 issues will be out in English as Okay. a box set, I guess. So and after that we are also doing a prequel novel for the Mrityubhumi, and then we will start season 2. So yeah, there are big plans for Mrityubhumi, and I think it is my so far apart from Rakshak, it is going to be my biggest work. Rakshak is huge. Okay. Actually, Rakshak was running for a long time. Rakshak Hmm. has even now it is going on, and like it is there for such a long time. It started, I think, in 2016 or 17, I guess, and still it is going on. A decade. Quite a few books have been published. So, but now, yeah, Mrityubhumi is the next. It is. I think it is going to be the second most like longest running series I have ever edited. And we are also trying this multimedia approach, novel, Hmm. comics, everything. We are trying to build it up as Walking Dead.
So Okay. I'm also trying to pitch it to different production houses for. But there's a little problem over there. There is again a conflict in the story, which is very controversial, and I don't know how the production houses here they are going to react to it. Mm. But yeah, but Maybe it depends on the results, I guess. yeah, it depends on the results. And also, like there is another. I think Ranveer Singh is doing a zombie movie. I think that might change the perspective of zombies in India. Yeah, So Mm. yeah. then, Let's I hope mean, so. if it becomes a hit, Yeah. then there will be a big demand for this kind of content. last few years, man, you've seen a lot of zombie movies and shows come up. So I think the Indian audience is now ready. A few years ago, there was this Go Goa Gone, Saif Ali Go Khan, a Barbon, huge there was hit. Zombie Reddy, there was this movie called Zombie Wali, but they were Yeah, yeah, mostly yeah. comedy, Marathi like movie. Marathi. But most of these movies were comedy movies, so it was more still like horror comedy, a genre which I really Yeah, dislike. A genre which I really really dislike. So, but this one Pralay is going to be a serious film. So I hope that if it becomes a big hit, then yeah. there will be there will be demand for more content. And Mm. by that time, I True. think I will have more content in my hand. Like the first Mm. season is over. I think the novel will be over by that time, and then we'll go Yeah, for season two also. So let's see. But I'm very, what you can say, very altruist about this Mrityubhumi series. I'm just waiting for the English version to come out so that like our pan India audience they can also enjoy it. It got very good reviews correct. in Bengali. They have Yeah, said I that just they are finished able to reading enjoy it. it a few days back, and I personally loved it, where it is going. Like the Yeah. possibilities are endless now. And the Yeah. most fun part about this, now when I'm writing this prequel, so Mm. why I love writing this story because I'm writing it as if like I am in that situation. Like in that, Mm. Okay. because I always thought about these zombie situations, the apocalypse situation. So what would I Mm. think? How would I react Yeah. to this kind of a crisis? So that is very fun when I'm trying to create these situations and how to overcome these situations. What a person can do try to make it more realistic. So it's a lot of fun doing this. I now I can understand. How much fun Robert Kirkman was having when writing the Yeah. this Writing The Walking Dead. Walking Dead. Yeah, The Walking Dead. Yeah. so this Yeah. is just Walking Dead. This is I will admit it in front of everyone. This is our version of Walking Dead. So Mm. there is no two ways about it. Right. That's like setting up a huge benchmark because I think The Walking Dead as a book, as a graphic novel was tremendous. And the show also thankfully did so well. They created a lot of other characters that you started rooting for. So in the beginning, it's just a father and son and the mother and the friend. But then later on, like you start rooting for other characters. You want to know what's going to Yeah. happen. And if they Yeah. die, then you are devastated. So that's the beauty of a Yeah. show and a series like The Walking Dead. So And we are also trying to yeah, do that. I think Manish has read the story, so I think exactly. he can also see the complex characters over there. What are the stakes and Yeah. how like in zombie story the humans are the main characters, zombies are just there in the background. So the True. more interesting human characters you create, the more successful your story is. And the So situation. Yeah. Yeah. and the situations, yeah. Correct. What Like I read drives your people to take certain decisions in their lives, that is very hmm. important. And not to Like I put read Pranay your Bhai's Caravan. expectations too high, but yeah, you can get the similar kind of experience that Walking Dead delivered in Mrityubhumi as well. That much I can vouch for as of now. So I look forward to that. Like I enjoyed the Caravan also. Like, there you have
the cop and the hoodlum, like very 1980s kind of a dynamics between the two characters, like Jackie Shroff, Anil Kapoor kind of thing. Ah, And then you have those amazing vampires who are there, and like they are extremely mysterious. Then later on, you start to know a little bit more about them slowly as you read more. So I think that really helps to kind of build intrigue. So Hmm. I'm sure that would be Mrityubhumi would be even more exciting. Caravan was more fun, like Caravan was, there was Yeah, comedy, there was action, there was this love yeah. story and all The this happening. banter, yeah, The between banter the of the heroes. characters and, like Yeah. how the character of Asif, like how he reacts Mm. to such a certain situations. So Hmm. Yeah. Yeah, there was a Mrityubhumi very, lacks that humor element. It's very no, grounded and this, serious through and yeah, through. it's very serious. Yeah. Because, Oh, it's going to be like dark. Yeah, It yeah, will be it's very very. dark. Okay. it's dark, it's dark and, like it's very real. Because It once Hmm. you get certainly into a highlights situation the like that, Bengal situations as well. yeah, yeah, Okay. Current situation. yeah, yeah. So no, the thing is, once you get into a situation like that, I doubt like humor will come into your head at any kind of like situation. So So, like how to derive. But still, I'm trying to in the prequel novel. So there are more characters over there. So it's the novel is also going to be quite thick, I guess. More than 300 pages, I guess. So okay. yeah, so the Bengali version will come, and then I will translate it into English. So I'm writing in a very different way. I've never written novels before in my life. And I thought you So would be the one writing in English and then it will be yeah, that is translated that in is Bengali. what we are doing. That is what we are doing. But the thing is, it started a little, like I was giving him a synopsis on which he was expanding. But now I am writing more. Now it's more detailed right now. It's not just a synopsis and then I'm sending it. I'm writing the whole scene. So right now I'm writing it as a novel, and then some time is like he also needs some time to translate it. So yeah, it's taking a bit of like it's a new because I've never written novels in my life. So it's something new that I'm doing, and but it's quite fun actually, like because I get to tell more stories about these characters, getting new Hmm. characters and Yeah. how the whole thing started. It's called Mrityubhumi Zero Day. So it starts from the Okay. very point that this whole thing started. So Cool. and our main hero takes his wife to the hospital, and then what happens? So that's the story. And after hearing fun, something very recent came to my mind, and that is if you want something entirely comedic, I think this Oh, is something that you can go for. But again, this is strictly in Bengali. So, there is Pranay an bhai English and version. SK. No, there is an English version But available. that's not in Some, print anymore, I guess. Level no, 10 but के you अंदर can हुआ था. find it in the web. You can find it in the web, but it's a different version. So basically, Okay. what happened? This character called Sando, Sandoda. yeah, I wrote it long time back in 2011, I think 11, 12, what time pe. So that time I was working with this company called Level 10. So we created quite a few stories. It's wacky, like this guy is a detective and his wacky adventures. It's crazy totally. But it's very rooted in, again, it's very rooted in Calcutta. So, like the humor is very Calcutta types. So then again, that company it shut down. But, like I retained the rights on the character. So so when I was working with this new publisher, so we thought that, okay, let's reintroduce this character with Right. new artwork because I can't claim those old artwork. No, they paid money for that, so I can't claim those artworks. So we took a new artist and same stories, a little Hmm. changes here and there to make it more contextual now. And we redid the whole book once again. But if you want to see the original one, you can go to internet and you can check out once again. I will just Nihodo Media, Nihodo, Nihodo Media, Sandoda, old school. If you search for it, you will get Okay. the
old comics in the web. I'll And check it fun out. fact, there is also a short film in Bengali based on this Oh, character. Oh, okay. That is Nice. hilarious, but again, it's in Bengali. So, yeah, there is I think there is it has English subtitles, but yeah, it was very long time ago. Yeah, we made it in 2013. yeah, it's low budget but stupid fun. Yeah, it's more Yeah. like a stoner comedy, like that kind of thing. Mm. What is your take nowadays? There's a lot of AI being used in comic books. What do you feel about that? I think if you AI can aid your work, like I don't think we should be completely dependent on AI because that doesn't give the best result also. But we can certainly take AI and we can like use it to aid our work. So Yeah. as for example, like I was just drawing with Google Gemini. So they have this very nice feature of like say if you take a like take any scene, say you take Hmm. Connaught Place, or you take say Yeah. like Gateway of India, and you just put it over there and tell it to transform it into line art. Hmm. You know, so AI transforms the whole thing to line art. So you get your full background over there. You know, Okay. and you just put your character, draw your characters in front of them as you want it. Hmm. So you don't have to draw everything like from like all the details and everything. You can use it as a background, and then you can just Yeah. build on like build on these things. Say like a few days ago, like I was doing some promotion for the novel, this Mrityubhumi. Uh, Hmm. then I just went to Google Gemini and I gave them a scene from the novel, and I told them to make something out of it, and the result was pretty nice. So Okay. they made the scene pretty well. So for promotions also you can use AI. Yeah. There's no Yeah. Yeah. but yeah, but I'm against like using AI and making a comic because I see that the result never comes proper. It, Right. the story feels disjointed. Uh, the The shots soul feel goes missing. hmm? Yeah. Even The the So soul characters kind look of goes different. missing. hmm, because I think like AI looks very good at single pictures. But once you Hmm. start, like having a continuous story with different shots and everything, it loses its spirit. It loses its soul. Yeah. Yeah. Yeah, So yeah. And it's not very trustworthy. Sometimes like you see a character having three hands, like yeah, yeah, and yeah. if you're not very careful, and those things can just kind of pass by and you realize, अरे ये आदमी के तीन हाथ हैं, कहीं पे हाथ और पैर merge हो रहा है, या eyes have like changed. All of those small things are also नहीं still पहले से तो अभी imperfections which are काफी there. इम्प्रूव हो गया है। नहीं नहीं ये जो एरर्स होता था हाँ. ये पहले बहुत Mm. ज्यादा होता था अभी अभी तो काफी कम हो रहा है। आई सी वेरी सरप्राइजिंगली गुड लाइक रेंडर्स मतलब जहाँ पे सब कुछ एक्यूरेट है वगैरह सब कुछ है। But like I feel, yeah, you take it as a to aid your artwork. Like to like you can Assist. because हर टाइम पे पीछे का पूरा बैकग्राउंड बनाना कमबसम हो जाता है। तो आप अगर Correct. एआई यूज करके थोड़ा बैकग्राउंड बना लेते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? Yeah. You can take Hmm. some photographs and convert it into line art, and then you ask if you are coloring it, then you can ask an artist to color the whole thing. It looks like a very fresh new piece of art. It won't look like something that has been generated. So I think Right. it's high time the artist should start thinking about it because I think it is very helpful. Some of Hmm. the stuff True. because like 1 second, I will just try to show you. Check this out. This is an artwork. So I took Oh, a real Okay. location. Yeah. So I took a real location and like I asked Google Gemini to make it into an apocalyptic scene, add Hmm. zombies and Hmm. everything over there. And you see, like it Yeah. is pretty well done. So if some, yes. and it actually Yeah. looks like, like proper artwork. It doesn't look like Yeah. AI generated. Agreed. Hmm. Yes. It looks beautiful. Yeah. Another one which I did a few days back.
Okay. So like I think it's you can definitely use it for promotions. Promotions में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक पूरा बुक आप एआई में बना रहे हो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, स्टोरी में Yeah, कोई कनेक्शन नहीं रहता एंड लाइक shouldn't do it, like थोड़ा तो मेहनत करो Yeah. यार। exactly. True. नहीं, आपको पता भी था ना कि उन्होंने AI यूज करके they decided to make a whole Mahabharata series. It was horrible. It was लुक it was सो extremely horrible. Then few months later, we got Netflix show of Kurukshetra, which with its animation style, of course, it was a little like the old style of Indian animation, but it was much, much, much better than the. Oh, it was very good. I really liked it. I really liked that animation. It Yeah, was slightly Yeah. old style, Same. it was slightly stiff, but the way it was done, it was pretty nice. Yeah. I like the whole thing. Some of the scenes were so detailed out, and even the costumes and the palaces, like you could see the effort that had gone into the Netflix animation. So that was really wonderful. उसको because अभी उसको लेके आप थोड़ा उसको एआई से एनहांस कर सकते हो ऑब्वियसली। yeah, तो मतलब बट टू मेक द होल ब्लडी थिंग इन एआई लुक्स लाइक yes, अ फकिंग चीट, लाइक आप क्या कर रहे हो वहां पे, और वो दिखने में अच्छा भी नहीं लगता। इट्स नॉट दैट यू True, डू इट true. एंड इट लुक्स ऑसम, इट डजंट वर्क लाइक दैट, होता नहीं because है। बट पीपल आर, बट एक्चुअली द सिचुएशन राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक एआई कंटेंट। तो mm, अभी जितना मैंने सुना है, अभी तो मैं बॉम्बे में थोड़ा खबर वगैरह लेता हूँ यहाँ पे इधर उधर। So like all these platforms, they're going to start a different channel altogether, which is going to be completely AI content. Okay. तो ऐसा नहीं है कि एआई में आपको इन इन वीडियो एक्चुअली इन लाइव एक्शन इन वीडियो एनिमेशन एआई इज गोइंग टू make a lot of changes. I've seen some stuff which are pretty incredible. तो अभी एआई में बहुत सारी चीजें आने वाला है। It's high Okay. time that you start understanding that, and so I'll just like there is a company who is making AI content. Okay, Hmm. मैं गया था उनसे बातचीत किया हम लोग, तो they showed me some stuff which was pretty good, and they said that even if we make an AI content, we'll have to hire a director, we'll have to Hmm. hire a cinematographer, we have to hire a proper, like a writer, screenplay writer and story writer, whatever. So that like they can, because their direction is needed. Hmm. Because a prompt writer cannot have the vision a director has. yeah, Correct. So director Correct. will have to give his vision, on which the prompt writer will try to match that vision yeah, to create the. True. तो yeah, आपको वो क्रिएटिविटी आपको लाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एआई में कुछ प्रॉम्प्ट डाल दिया और वो एआई आपके लिए पूरा पिक्चर बना हाँ. दिया, वो नहीं होने वाला है वो कभी, और वो बहुत ही घटिया भी लगेगा। बिकॉज अ फ्यू डेज बैक आई वाज वाचिंग, there's this in YouTube there is a film called One Pishach. It is done by Rahi Anil Barve, the guy who made Tumbad. तो Okay. वो पूरा एआई पिक्चर है। अच्छा. शुरू में मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, the renders, the characters, they were looking so great, gorgeous and creepy and everything. But वो स्टोरी के साथ I couldn't understand what was going on. मतलब mm, मूवमेंट अजीब सा है, स्टोरी मतलब हिल ही नहीं रहा है, कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। So it is still at its very Correct. nascent stage. Like to True. reach there, to tell a proper story through AI, it's going to take some time and a lot of effort. Yeah. और वो एफर्ट ऐसे कोई एक आदमी बैठ के एक कंप्यूटर में नहीं होने वाला है। You have to have a proper production team behind it. Who will like Correct. plan it out properly कि ये हो सकता है। So it Hmm. will take resources. ऐसा नहीं कि आज मैं एआई में कुछ प्रॉम्प्ट डाल दिया और मेरा मूवी निकल गया, ऐसा नहीं होने वाला। I have just been recently gathering more and more information about Indian comic books and Indian publishing companies, because I started this whole thing with Marvel and DC, primarily Marvel, because that's where my love for comics grew. But I'm reading more and more into Indian comic books and their history. So
again, like we were speaking about Graphic India and its own issues, and then there's this whole issue with Raj Comics and all that, and so many other issues with Indian comic book industry. As a consumer, for me, I am not getting the continued series of titles as I want, like how it happens with Western media. Only the creative team knows what is the problem. As a consumer, I can only say that either there is not enough sales happening because there's not much interest in the public, or I can say that there is not enough copies being published by the publishing company, and therefore it leads to bad sales. But you have been in this industry for so long, like what do you think is the main cause for why potentially good titles don't get that deserved continuation? The sales or the publishing company puts a hold? No, both, like because the main problem that we are facing till date is distribution. Hmm. Because distribution in India, we don't have a distribution, honestly speaking. Like in US, you have these comic book stores. Okay. Before they were newsstands, which used to keep, they were pre-orders and everything like that. Even we have pre-orders, but the pre-orders कितना होता है? 10, 15, 20, 25 इतना pre-order होता है. वहाँ पे यूएस में एक बैटमैन का कॉमिक प्री ऑर्डर में ही हजार, मतलब लाख कॉपीज बिक जाता है वहाँ पे. बट द थिंग, जनरल अवेयरनेस का तो थोड़ा कमी है ही ऑब्वियसली. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. एंड द सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन. जो दिखता है वो बिकता है. सबसे बड़ी बात तो यही है. Hmm. तो व्हेन आई वाज, सिंस आई एम वर्किंग, अभी जो बंगाली में भी मैंने काम किया है, तो बंगाली में द पब्लिशर दैट आई एम वर्किंग विद, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन विद इन बंगाल. तो अभी क्या हुआ कि ऋतुभूमि अभी मेरा, आई थिंक आई हैव सोल्ड अराउंड पर इशू अराउंड 1000 से ज्यादा कॉपीज बिक गया है. इट इज लाइक अ बिग नंबर फॉर एन इंडियन पब्लिशर. वो चीज हिंदी और इंग्लिश में हो नहीं पा रहा है बिकॉज वी डोंट हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और यही Hmm. चीज मैं बार बार लोगों को मैं पूछ रहा हूँ कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करो. डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सीन है कि आप लोग कुछ सेमिनार्स कर रहे हो, बकचोदी चल रहा है, कॉन्टेस्ट चल रहा है, ये सब कर रहा है. बट व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट अबाउट ग्राउंड रियलिटी? पैसा कहाँ से आएगा? लोगों को कॉमिक्स अगर बेचेंगे उसके बाद ही तो पैसा आने वाला है ना. लोगों को बेचना Hmm. पड़ेगा. और बेचने के लिए लोगों को पता होना पड़ेगा कि ये है, वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है. तो ये एक, देर इज अ प्लेस कॉल्ड, मनीष व्हाट इज द नेम, कॉमिक्स जहाँ पे वो अजितेश, क्या नाम है बता ना. इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन, हाँ हाँ. तो सिनेमिक्स, वहां पे, अजितेश का पब्लिशिंग हाउस. हाँ, तो Ajitesh, वहां पे तो he मैंने, is the he is the president of ICA and also the CEO of the Cinemix Group. या, तो अभी मतलब क्या, मतलब बीच बीच में मैसेज आता रहता है, कुछ सेमिनार हो रहा है, कुछ क्लासेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. और भाई आप ग्राउंड रियलिटी में आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या कर रहे हो? आप एक होल Hmm. इंडियन बॉडी क्रिएट कर रहे हो, सब लोगों को बोल रहे हो कि हमारे अम्ब्रेला के अंडर आओ. तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के पहले पहले आपको वही सोचना पड़ेगा कि आपको किस, यू हैव टू टारगेट सर्टेन पॉइंट, सर्टेन, लाइक जहाँ पे लोग बुक्स खरीदते हैं. बुक्स हाँ. ज्यादातर मैंने देखा है कि दिल्ली में ज्यादा बिकता है, कैलकाटा में बिकता है, बॉम्बे में बुक्स इतना नहीं बिकता. यहाँ पे लोगों का बुक्स बुक्स पढ़ने का इतना वो शौक नहीं है. तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन सा पॉइंट्स है जहाँ पे लोग कॉमिक्स खरीद सकते हैं, कहाँ पे लोग. एंड यू हैव टू शोकेस इट कंटिन्यूअसली थ्रू सोशल मीडिया एंड व्हाटएवर. नया कुछ बुक आ रहा है तो तुरंत दिखाओ. एक एक फैन बेस क्रिएट करो. ये आ रहा है, वो आ रहा है, जो भी जैसा हो रहा है. तो जब तक आप ये सब चीज नहीं करोगे तो आपका सेल्स बढ़ेगा कैसे? हम लोग अपने अपने हिसाब से, वी आर लाइक स्मॉल आइलैंड्स, वी आर ट्राइंग टू promote our books through Facebook, through Instagram and whatever. But जब तक एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चेन चालू नहीं होगा तो हाउ विल आवर बुक्स रीच टू Hmm. आवर रीडर? जैसे आपको इतने दिन बाद Correct. आपको पता चला कि ये कॉमिक्स बुक, कॉमिक्स मिलता है, नाउ यू आर बाइंग. बट द सैडेस्ट पार्ट इज, आप अभी भी जाके आप देख रहे हो कि आधा से ज्यादा बुक्स तो मार्केट में मिलता ही नहीं है, ये आउट ऑफ प्रिंट हो गया Correct. है. That's तो true. ये आपको, आई आपके मीन पास ये कोई तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं आया. ये सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि एज अ कॉमिक लवर, एज अ कॉमिक बुक फैन, आई डोंट हैव अ प्लेस टू गो टू. लाइक एज यू सेड ना, इंटरनेशनली देयर आर कॉमिक बुक स्टोर्स है, न्यूज़पेपर स्टॉल्स होते थे पहले के जमाने में जहाँ पे यू कुड बाय.
यहाँ पे तो अभी न्यूज़पेपर स्टॉल्स भी बंद हो गए, बॉम्बे में तो, मुंबई में तो वो है ही नहीं। देयर इज नो सिंगल कॉमिक बुक स्टोर और एन आउटलेट, इवन इफ यू गो ऑनलाइन यू कांट हैव लाइक एंड वन प्लेस जहाँ पे आपको सारे नए और पुराने कॉमिक्स मिलेंगे, वेयर यू कैन पिक एंड चूज। So all these things are from a system, distribution system, and from a like I want, but there is no place that I can go to and say कि हाँ ये रिलायबल प्लेस है और यहाँ पे मुझे पिछले 20-25 साल के सारे कॉमिक्स भी देखने को मिलेंगे, जो मुझे खरीदना मैं खरीद सकता हूँ। दैट आल्सो डजंट हैपन बिकॉज वो है ही वही नहीं तो यहाँ मैं बोल पे। रहा हूँ ना आपको, आप फिजिकल आपको करना मुश्किल रहता है। एटलीस्ट एक तो मतलब एक वेबसाइट रहे या एक पेज रहे कहीं पे जहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है। देयर आर सम हाँ पीपल, ब्रो। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रीसेलर्स है, छोटा छोटा सेलर्स है, दे आर ट्राइंग टू, वो लोग कर रहे हैं। और छोटा छोटा करके नहीं होगा, देयर शुड बी बिग मनी दैट दैट नीड्स टू बी पम्प्ड इनटू Yeah. दिस। नहीं, आई थिंक द एटलीस्ट अनदर जितने भी प्रॉब्लम कॉमिक्स इज है, द जितने भी राज कॉमिक्स, पुराने कॉमिक्स का स्टॉक उठाओ, नए कॉमिक्स का स्टॉक उठाओ, एक साथ करो और उसको वहां पे बॉम्बार्ड करते रहो फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो आपका जितने भी लोग अगर रिमोटली इंटरेस्टेड भी है, ठीक है, जो लोग जैसे तो मांगा या एनिमे या डीसी मार्वल पढ़ते, वो लोगों को जब दिखेगा अच्छा ये भी मिल रहा है, तो देन दे आई कांट से दैट दे विल ऑब्वियसली गो, बट देयर इज अ 10 to 15 to 50% चांस कि आप वो देख के आप Yeah. वहां पे जाओगे और वहां से कभी कभी आप वो प्रीव्यूज अगर आपको पसंद आ गया तो आप ऑर्डर कर सकते हो वहां से। हाँ, तो True. ये चीज कोई नहीं कर रहा है। मेरा सबसे बड़ा गिला शिकवा तो दिक्कत यही है, कब से तो मैं सबको मैं यही बता रहा हूँ। यूनिटी का भी इशू है। पब्लिशर्स या क्रिएटर्स कभी कभी एक दूसरे का तरक्की से प्रॉब्लम हो रहा है, एक दूसरे के साथ काम करने में उनको दिक्कत हो रहा है। और मोर ओवर मुझे लगा था कि जब कॉमिक कॉन का बूम हो रहा था कि समथिंग प्रॉमिसिंग विल कम आउट ऑफ इट, बट एज यू वर सेइंग कि कॉमिक कॉन इज लेस अबाउट कॉमिक्स नाउ एंड मोर अबाउट एनिमे एंड मांगा एंड स्टफ। And then this young generation, they have a tendency to look down upon Indian comics कि भाई Indian comics क्यों, we have mangas that we can read and act cool। तो वहीं क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी जैसे इशू है, तो क्या होता है कि ना, टू break even the cost, the price is also in the expensive range, जिसके वजह से the younger readers are having second thoughts about shall I go for Indian comics or just go for Marvel and DC, because that way I can still be relevant and I can look cool कि भाई मार्वल डीसी खरीद लिया, वहीं 1,000 रुपए इंडियन कॉमिक्स के पीछे क्यों दे। तो मे बी Yeah. यही अवेयरनेस की वजह से भी शायद वो आईसीए कोशिश कर रहे थे कि हाँ थोड़ा बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो, उसके बाद देखा जाएगा। बट ये एक बहुत बड़ा लूप है, एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मिलकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो सबसे पहले यही लगता है कि अगर आईसीए जैसा कोई एक देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप वहां पे आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट से आप हेल्प ले रहे हो, वो ले रहे हो। तो देखो, एट दिस मोमेंट आई डोंट हैव एनी ईगो, ठीक है, मेरा 20-22 साल मेरा यहाँ पे बीत गया है। मुझे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने के लिए भी, कुछ भी। आई जस्ट वॉन्ट लाइक कि सबका ही काम बाहर आए यार, सबका ही काम, जितने भी लोग काम कर रहे हैं अभी, वो राज कॉमिक्स बोलो, ये बुलजाई बोलो, याली बोलो, होलिकाओ बोलो, ये अंतरीप बोलो, जो भी है, आई डोंट हैव, लाइक मुझे, मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक जगह रहे जहाँ पे जितने भी पब्लिशर्स है सबका काम उसके पास है वही और तो वहां बोलो, से इनकी बेच। ईगो के वजह से ये लोग एक नहीं हो रहा है। एक आईसीए बना तो कुछ और भी एक एंटिटी बन गया रिसेंटली, आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम। तो ये सब चीजें हो रहा है ऐसे में ना, व्हेन यू आर दिस स्मॉल एंड यू आर दिस टॉक्सिक वे में कंपिटिटिव हो ना, तब एक साथ मिलकर ग्रो कर पाना मुश्किल हो जाता है। दैट वे इट्स अ लिटिल होपलेस। बट और एक चीज, जो मल्टीमीडिया पेनिट्रेशन नहीं हो पाया बहुत सारे कॉमिक बुक आईपीज का अभी तक, द ओनली सक्सेसफुल वन इज विलेज। तो Yes, वैसे अगर yes. और भी, हाँ, और भी कुछ और टाइटल्स, कुछ और आईपीज, कुछ और सुपर हीरोज अगर मूवीज में ट्रांसलेट होते या सीरीज में, तो शायद इंडियन कॉमिक्स का स्थिति और बेहतर हो पाता। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल था राज कॉमिक्स के पास ही। अब उनके बीच में ही यूनिटी नहीं रहा, दे आर नाउ ब्रोकन इन 3 पार्ट्स। उनका जो आईपीस था, उनका जो कैरेक्टर्स था, उनको अगर मूवीज में ट्रांसलेट कर दिया जाता सही वक्त पर, तो इंडियन मनीष, एक कॉमिक्स प्रॉब्लम है यार यहाँ पे ना, एक आप लोग सोचते हो कि सुपर हीरो, बट सुपर हीरो मूवी बनाने के लिए कितना खर्चा आता है, कोई आइडिया है क्या? इफ यू आर क्रिश ट्राइंग तो टू बन मेक अ गया ना, सुपर हीरो, मतलब इट इज, व्हाई डू यू राम। थिंक दैट लाइक विलेज क्यों बन पाया? बिकॉज वहां पे वो मतलब लाइक उसका इन्वेस्टमेंट आप सोचो,
एक सुपर हीरो आप अगर बनाने जा रहे हो यार, ये क्रिश होर कब से काम चल रहा है, अभी तक बन नहीं पाया बिकॉज ऑफ द Yeah, बजट इशू। yeah, इवन मैंने अगर काम किया मूवी है। भी नहीं बनता है, इवन अगर मूवी नहीं बनता है, अगर एनिमेशन शो भी बन जाता है, लाइक हाउ हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, पाप ऑफ गर्ल्स था, या yeah. सामुराई जैक था, ऑल दोस थिंग्स वी ग्रो अप वाचिंग एंड वी लाइक्ड इट, तो उसके कॉमिक्स भी हम पढ़ रहे हैं अब तक, या वी वुड लाइक टू रीड। तो आई थिंक अगर एनिमेटेड शोज भी बनते हैं ना, इवन दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉप कल्चर, लॉट ऑफ कूल, जो यंगर ऑडियंसेस विल स्टार्ट गोइंग फॉर। मांगा लोग क्यों पढ़ते हैं? इंडियन क्योंकि वो एनिमेशन सस्ता का है, हालत सोचो। मुफ्त में मिलता है, इसलिए पीपल आर ग्रेविटेड टुवर्ड्स दोस mangas एंड एनिमेज। प्रॉब्लम इजी तो है वही हो वो। गया ना, आप इंडियन एनिमेशन का भी हालत सोचो। वो मोटू पतलू छोटा भीम इससे आगे कहीं गया ही नहीं है वो लोग, तो इसीलिए इंडियन Mm. एनिमेशन हाल भी अभी खराब है। फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा चेंज होना चालू हुआ है with this mythological animations like Narasimha हाँ and बता नरसिम्हा। Mata Narasimha. Bahubali, which looks really nice. यप। Yes. तो देखते हैं आगे कुछ इसका कुछ चेंज होता है कि नहीं, Yeah. बिकॉज क्या एनिमेशन में तो एटलीस्ट आई एम सीइंग सम होप, कुछ नया नया Mm. काम हो रहा है पहले से। हम्म। बट मूवीज में बहुत मुश्किल है यार, लाइव एक्शन में ये सब करना। मतलब क्रिश इतना बड़ा एक ब्रांड है, उसको अभी माउंट करने में जितना पैसा चाहिए जो है, इज नॉट बीइंग एबल टू, बहुत मुश्किल हो रहा है। बट ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, ये Yeah. लोग क्रैक नहीं कर पाए, लाइक नागराज नहीं बन पाए बट नागजिला बन रहा है इधर। This also happened. Minnal Murli happened and Loka happened. And even though Kalki is not exactly a superhero movie, but it has the sci-fi and superhero kind of elements in it. आपको अगर कोई अगर कैरेक्टर का एडाप्टेशन करना पड़ता है, तो यू हैव टू पे मनी टू द प्रोड्यूसर्स, टू द Mm. पब्लिशर्स। हम्म। यहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं पब्लिशर को पैसा क्यों दूं, मैं अपना कैरेक्टर बना लूंगा। हम्म, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना भी आप बोल लो ये नागराज या ध्रुव या जो भी कैरेक्टर होगा, जितने भी कैरेक्टर्स है, वो एक सर्टेन बेल्ट में ही वो लोग पॉपुलर है, Mm. उसके आगे नहीं है वो लोग। मेकिंग अ पैन इंडिया मूवी, बिकॉज यू डू केयर, यू आस्क एनीवन नागराज डोका कौन है, किसी को नहीं पता। तो उन लोगों ने वो हिंदी के आगे वो मार्केट गया ही नहीं। वो हिंदी Mm. हाँ। हार्टलैंड का जितना मार्केट है उन लोगों का, उसके आगे कभी गया ही नहीं वो लोग। तो आज डीसी मार्वल क्यों है? बिकॉज एवरीवन रीड्स देयर कॉमिक्स, एवरीवन थ्रू आउट यूएसए एंड इवन आउटसाइड पीपल रीड देयर कॉमिक्स। Yeah. तो एक सिंगुलर लैंग्वेज है, दैट इज ऑल्सो नागर। आई थिंक राज कॉमिक्स दे शुड हैव पब्लिश्ड इन इंग्लिश, एंड Mm. बाद में क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए था, तो वो लोग कभी किया नहीं। वो राइटर भी उन लोगों का कुछ है, ऐसे लोग वही लिखते हैं। नए Mm. राइटर्स को कभी उन लोगों ने लिया नहीं, जिन लोगों को लिया उन लोगों का क्वालिटी क्या आपको बताइए। नए Mm. आइडियाज दे आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन, तो ऐसे कंपनी आगे कैसे बढ़ेगा आप बताइए। आपका लैंग्वेज ही बहुत लिमिटेड है, हिंदी में बनाते हो, Mm. और हिंदी में आप कोई भी आप बड़े जगह पे जाओ, इवन इन दिल्ली ऑल्सो, दे विल लुक हिंदी एज डाउन मार्केट। एंड हिंदी में अगर ओनली कुछ आप निकाल रहे हो तो आपको वो डाउन मार्केट ही सोचेंगे, इंग्लिश में अगर जब तक हम नहीं निकाल रहे। out of the Gupta brothers, only Sanjay ji has understood this, and then he made Alpha Comics, and a bunch of their titles now are being published in English हम्म। predominantly, हाँ। catering to the younger audiences. And they're doing a good job of it. Thankfully, in Bengali it is not like that. Which is a Hmm. good thing, like, उसी बहाने जो regional artists है, regional storytellers है, they are also getting some motivation to keep on going. And if you see, like, Gujarati, like I am from, like, my mother tongue is Gujarati. There used to be a lot of good Gujarati writers, and I'm talking about novels and books. But अभी जो last 10-15 साल में है, that has just gone down. तो वो market almost खत्म जैसा हो गया है, because those readers are not there anymore. It's a good thing that Bengali is still being read and sought after. Yeah. But that is the problem of India. There is certain part of people who will want to read in their own language, and then there's obviously the rest of the people who will want to read it in English. तो आपको अगर कोई एक बुक बना रहे हो, आपको 2-3 वर्षन आपको बनाना ही पड़ता है, तो वहां पे Correct. आपका खर्चा भी बढ़ जाता है वहां पे। Cost. जैसे आप यूएस में क्या आप इंग्लिश में बना रहे हो, हर कोई इंग्लिश पढ़ता है वहां पे, एवरीवन रीड्स इंग्लिश ओनली। तो Yeah. ये इंडिया का बहुत प्रॉब्लम है। लाइक टू व्हाई डू यू थिंक दैट इंडिया क्रिएटिवली इतना आगे नहीं बढ़ पाया, हॉलीवुड जैसा या कोरिया जैसा Mm. या दूसरी जगह जैसा? Too सो much मेनी लैंग्वेज diversity. ओवर देयर।
Yeah. हाँ, तो इसमें लैंग्वेज के वो लैंग्वेज के बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अगर किसी ने अगर कुछ बहुत बढ़िया मूवी बना लिया, तो वो जैसे तेलुगु में कुछ अच्छा मूवी बना लिया, फिर भी नाउ तो बिकॉज इट इज मूवी, इट्स बिग बिजनेस, फिर भी अभी पैन इंडिया निकल रहा है, डब हो रहा है, जो भी हो रहा है। बट इन अ स्मॉलर स्केल बिजनेस है कॉमिक्स, ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। Hmm. Yeah. तो आपको एक 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 झटके से आपको पूरा समेट ले सकते हो, ऐसा लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश ही है। और इंग्लिश भी हर कोई इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहता। जैसे हिंदी रीडर्स को सर हिंदी में लाइए, हिंदी में लाइए, हिंदी में लाइए, तो वही हो जाता है ना। हिंदी यूज टू बी अ वेरी गुड मार्केट, लाइक आई, जब तक ये राज कॉमिक्स वगैरह था, रेवन कॉमिक्स, मनोज एंड ऑल दिस, इट यूज टू बी अ वेरी गुड मार्केट। बट आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली, मार्केट तो गया ही ऑलमोस्ट। और वहाँ का जो रीडर्स है, जो फैन बेस है, इट्स बिकम एक्सट्रीमली टॉक्सिक। मतलब बहुत ही सिनिकल, बहुत ही मतलब घटिया बातें। देयर इज, आई डोंट फील एनी। मैं पहले आई यूज्ड टू लाइक ब्राउज दिस फोरम्स एंड एवरीथिंग इन हिंदी कॉमिक्स के बारे में। इतना नेगेटिव फीलिंग होता है वहां पे जाके ना, मतलब क्या बताऊं। देयर ओनली अ वो फ्यू लोग गाइस जरूर हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड। जरूरत से ज्यादा वो लोग नॉस्टैल्जिया में जीते हैं ना, तो दे आर वेरी हाँ, टॉक्सिक टुवर्ड्स न्यूअर ट्रेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी है, तो दैट्स व्हाई आई हैव, मुझे अभी हिंदी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। मैंने बता दिया भाई, मेरा मेरा अभी कुछ लोग पूछ जाता है मृत्युभूमि हिंदी में लगी, तो मैंने थोड़ा मार्केट रिसर्च किया, इधर उधर बातचीत किया, तो मुझे मेरे पास खबर आया कि अगर नया कंपनी कोई हिंदी में कुछ बना रहा है, तो इट्स नॉट गुड, मतलब सेल्स नहीं होने वाला आपका। वो पुराना पुराना जो नागराज वगैरह वही बिक रहा है, तो नवनीता, इट शायद इज आप नॉट। लोग ट्रांसलेशंस भी शुरू कर दिए थे हिंदी का, राइट? हाँ, चालू किया था। तो देन वी गॉट द रियलिटी चेक, काफी लोगों से बातचीत हुई, इनफैक्ट विवेक गोयल के साथ भी बात हुई। तो विवेक ने बोला कि भाई ये रिस्क मत लो। What I wanted to ask was like, circling back to that whole distribution thing that is there. अभी जब when I was like school में था तब तो Gotham Comics was very famous, right? तो मुझे तो वो I used to get it at very small book outlets or like newspaper stores. 15 rupees you go get that was the specialty. It was very cheap, so kids like me could afford it. But the point being, like, I am from Bangalore, and I know the reader base is a lot higher in the northern side from Karnataka, and there is a lot more there. But the thing is, I'm getting it here in South also. So when they had the distribution network 20 years back, why did they let it die down in all these years then? Distribution was done through this company called IBH that time. Hmm. तो IBH का भी हालत बहुत खराब है। That Hmm. time IBH was doing very good work, हाँ, but they used to take a lot of discount, मतलब जो आपका जो परसेंटेज लेता है, वो Hmm. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज्यादा लेता था वो लोग। मतलब अगर Hmm. आपका बुक का अगर प्राइस है 15 रुपीज, तो वहां से 10 रुपीज वही ले लेंगे, 5 रुपया Oh. सिर्फ इन लोगों के पास आता है। ठीक है। Okay. एंड जो भी था, दे वर स्टिल प्रोड्यूसिंग। तो शुरू में आप, इफ यू हैव नोटिस दैट इन द बिगिनिंग द क्वालिटी ऑफ द बुक्स वर वेरी गुड, मतलब Hmm. Yeah, पेपर it क्वालिटी। kept बाद on में पेपर क्वालिटी degrading. क्वालिटी, या पेपर क्वालिटी स्टार्टेड डिग्रेडिंग एंड एवरीथिंग Hmm. दिस। तो देन आई वाज देयर थ्रू द होल जर्नी, बिकॉज दैट वाज द कंपनी आई स्टार्टेड माय लाइफ विद। Hmm. तो क्वालिटी खराब होते गया, टू कीप सम मार्जिन एंड एवरीथिंग, एंड देन आईबीएच के साथ वो जमानी, वो बंद करना पड़ा उन लोगों के साथ। they started a Hmm. new I, distributor who were not that good। और उसके बाद वो then this Virgin Comics started and everything, छोड़ो यार, बहुत हो गया ये, दूसरा बिजनेस करो। Yeah. Right. तो yeah, that time because IBH was the biggest distributor in India बुक हाउस। अभी भी वो लोग है, बट उन लोगों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। बट the kind of percentage hmm. they demand, that is very tough, even now they are the इतने सारे जो अभी ना मुझे ऐसा लगता है कि ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इट वोंट वर्क एनी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का दिन खत्म हो गया है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। Hmm. बट ऑनलाइन देयर नीड्स टू बी अ बिग पुश, लाइक देयर नीड्स टू बी सम मनी, देयर नीड्स टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटर, कि आपको अगर अच्छा आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, से आपको अगर वो अगर 30% में बुक ले लिया, ठीक है, तो बुक ले लिया, उसके बाद देन ही स्टार्ट सेलिंग, बट ही टेक्स इन Hmm. बल्क।
एंड ही बॉम्बार्ड्स द एंटायर इंटरनेट, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। जैसे वो एड्स आते रहते हैं ना फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, आपको उसे ऐड डालना पड़ेगा वहां पे। ऐड डाल रहा है, ये है, ये है, ये है। क्रिएट सम न्यू कैच फ्रेजेस, वर्क विद द पब्लिशर्स के इसको प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा यू हैव टू बी यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट, कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। मुझे और कुछ नहीं, मुझे पब्लिशर नहीं बनना है, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये बुक्स लेना है और इसको बेचना है, और यहाँ से मुझे फायदा निकालना है। तो दैट सॉर्ट ऑफ बिजनेस माइंड नीड्स टू कम ओवर देयर। सब लोग अभी जो कर रहे हैं ना वो पैशन से कर रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए कोई कर नहीं रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो बिजनेस वाले लोग अभी चाहिए यहाँ पे, who can see potential in this content, they can see potential in this market, and they have to take it forward. मुझे So तो I don't know, like maybe we should start talking to different people, but yeah, like they are not business people. No, we can't. अबे yeah. यार, मुझे वो आईसीए के लिए मुझे उम्मीद था कि आईसीए ऐसा काम करेगा, बट अभी तक तो मैंने कुछ देखा नहीं आईसीए की तरफ से। I think that way, like, I at least as a consumer only, I'm again talking. I don't know what's the real thing, but at least I felt कि Graphic India में with the initial lineup, and because I buy only single issues, it feels like okay कि groundwork उन्होंने किया है, अभी ये publish किया है और उन्होंने distribute किया है, but right now what I'm seeing is that I think it's Sharad Devanjan. He goes every year to the San Diego Comic Con. He has a panel there and he talks and stuff. और उससे ज्यादा बात कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि अभी तो आई थिंक 5 साल हो गए सिंस दे लास्ट एवर प्रिंटेड और पब्लिश्ड अ कॉमिक बुक. इट्स ओनली एनिमेटेड सीरीज नो, because it feels like he has a business mindset because he's marketing it for the western, but at least somewhere he's marketing it, but he's again there's no printing and distributing of it anymore, no. तो वही तो प्रॉब्लम है ना, बीच में अगर आप छोड़ देते हो काम तो वो तो मुश्किल है वहां पे। अगर आपके पास इतना कंटेंट है, उसको फिर से मार्केट में लाओ, फिर से प्रिंट Yeah, करने में क्या है यार, वो प्रिंट ही exactly. तो करना है आपको, और डिस्ट्रीब्यूशन में डालना है। ग्राफिक नॉवल बना दो एक एक करके, इन लोगों को चाहिए, उन लोग थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस दे के भी खरीद लेंगे। Yeah. और ये जो कंटेंट है उसको तो मार्केट में इसको उसको जिंदा रखना तो बहुत मुश्किल, जो वो जिंदा रखना तो बहुत जरूरी है ना। यू हैव टू कीप कंटेंट अलाइव एंड फ्लोटिंग इन द मार्केट। यू हैव गॉट सच अ big vast like a library of content in your hand. Yeah. This is And the same thing that happened with a company called CrossGen. The CrossGen was also a very big company. They also started, they had big funding behind them, and they had the best artworks, very good stories. वो भी बीच में ऐसे वो हो गया वैसे। Let's also उसका take the name of Rowold, Avion 9. रोबोट तो वो तो खड़ा होने से पहले ही गिर गया। But Avion 9 was a complete series. Yeah, it was complete, but ये प्रॉब्लम क्या है ना, जो लोग the people who are doing this business, they don't know the business. That is the problem. Oh, there was one guy who, you know the story. You are also part of it. वो विक्रांत भार्गव वगैरह क्या किया, कुछ नहीं किया। I did उन my लोगों को best क्या, to make ये sure चिल्लर है। but कुछ फायदा नहीं हुआ, वक्त का बर्बादी। एक अमर चित्र कथा ही है जो कंसिस्टेंट रहा है पब्लिश करने में तक कॉमिक्स. आई थिंक बी कौन? दैट्स ऑल्सो अमर चित्र कथा. हाँ, but उन Tinkle. लोगों का comics is not comics. There is more like educational books. Yeah. I don't consider Amachita Katha as comics. It is हाँ, more like educational books. It's not comics. No, the comics but part is the tinkle वगैरह for children's comics types. हाँ, वो चिल्ड्रन and कॉमिक्स है वो, मतलब उससे कोई कंटेंट आपका जनरेट नहीं होता। दैट इज द थिंग, आपको कंटेंट जनरेट करना पड़ता है ना। आपको कोई भी अगर क्रिएटिव मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है, जो भी करना है, दे आर डूइंग दैट। सी देयर बिजनेस मॉडल इज वेरी डिफरेंट। इन लोगों को कंटेंट नहीं जनरेट करना है, इन लोगों को बस वो एडुकेशनल बुक्स, एडुकेशनल कॉमिक्स निकालना है और बच्चों के लिए छोटा मोटा स्टोरीज निकालना है, बस इतना और ही जो चाहिए। लाइब्रेरीज या फेयर्स में पुश कर सके, बुक फेयर्स, उस टाइप फेयर्स का में, कंटेंट। लाइब्रेरीज में पुश कर देता है ये लोग बुक्स, बट yeah. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू क्रिएट कंटेंट। वो वो अलग है। What that kind of books do essentially na, is create curiosity and reading habits in the small kids. And वही बच्चे जो पहले टिंकल पढ़ते थे, then they graduate to reading, say, more mature content, like it could be Alpha Comics, Raj Comics, etc.
तो वो एक हैबिट कल्टीवेट करने में हेल्प करता है इफ यू आर रीडिंग मुश्किल क्या होता से है ना टिंकल सर, और आपने चंपक। जो बोला मैंने, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। द प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज ये लोग टिंकल से डायरेक्ट मांगा में चले जाते Yeah. हैं। मांगा इज फ्री क्योंकि ना, क्योंकि द मतलब। रीजन भी, व्हाट इज विजिबल यू विल रीड, नो। मांगा मांगा ज्यादा विजिबल है। पायरेटेड कॉपीज मिलता है यार ऐसे, मतलब रोड साइड में मैंने सौ देखा कि रुपए 200 पायरेटेड रुपये में मांगा मिलता है। मांगा का इतना मोटा मोटा वॉल्यूम्स मिल रहा है वहां पे। यूगियो Yeah. ये सब मिल रहा है वहां पे, सस्ते में ऐसे पायरेटेड कॉपीज बिक रहा है वहां पे। तो जो दिखता है वो तो बिकेगा ना। हम लोग दिख ही नहीं पा रहे, खुद इंडिया में बैठ के इंडियन कंटेंट बना के हम हमारा कंटेंट लोग देख नहीं पा रहे, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और अमर चित्र कथा अगर भी अगर इसीलिए अगर इसलिए आपका रेलिवेंट है। अगर आपका अमर चित्र स्पेशल कथा से आपका अगर राज कॉमिक्स, अल्फा कॉमिक्स, या ड्रीम क्रिएशंस या होली गाउज वहां पे अगर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये लोग मांगा में चले वो आते हैं होता डायरेक्ट। नहीं। That unfortunately is the case right now. I was talking like just a few days back with Dr. Manish when the Calcutta Comic Con happened, and Abhi Mumbai Comic Con is also going to happen. So we were talking about it in general, and people come there, they're not interested in the stalls. Like, chalo, main guest is a foreigner, so they will probably go see him because again, it's a Marvel or DC person. They'll go see you. बाजू में जो नौ स्टॉल नौ there'll be nine stalls. They're all Indian creators. They'll not even bother to go. Maybe one or two they might go to. They'll just come अरे for all the that's the exhibit. trend. Like I attended it for the first time last year जब कोलकाता में ये पहली बार हुआ था, and this is the second time. And I thought second time में क्या होगा, improvement होगा, growth होगा. No, the number of actual comic book stalls has reduced now. And in fact जिन लोगों का बड़ा stalls था वो stalls का size आधा कर दिया. So that is how deplorable the condition is. इसलिए ना मैं ये टॉपिक में घुसना ही पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज जब भी इंडियन कॉमिक्स का फ्यूचर या प्रेजेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ, इट्स वेरी ग्लूमी ओवरऑल। क्योंकि कॉमिक कॉन का नहीं फोकस मनीष, कहाँ इस है? पे एक रीजन है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ये कोलकाता में एक्चुअली लोगों का परचेसिंग पावर भी कम है। तो आप बंगाल का यहाँ पे, हाँ, जनरल तो यहाँ एक्सपेंसिव पे कॉमिक्स होगा। कॉमिक्स बोलो या आपका मर्चेंडाइज बोलो, जो भी हो, वो बंगाल में आपको इतना आपको वो बिजनेस नहीं देगा। मैंने बेंगलुरु में और बॉम्बे में मैंने किया है। आई हैव सोल्ड कॉमिक्स अराउंड लाइक 50-60,000 रुपीज ऑफ कॉमिक्स ओवर हियर। बिक बंगाल जाता इन था जनरल आराम इज वेरी वेरी प्राइस से। सेंसिटिव। नहीं नहीं, बंगाल बंगाल में बेसिकली आपका लोगों के पास पैसा कम है, तो उन लोगों को दे नीड समथिंग विच इज अ लिटिल चीप। तो जैसे बुक दैट्स व्हाई फेयर में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे वहां पे। बुक फेयर में लोग बहुत बुक्स खरीदते हैं, क्योंकि बेसिकली अभी अभी मैं क्या अभी मैं बार बार ये बुक फेयर में ही जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहां पे लोग आते हैं, खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बट वी ऑल्सो वी कीप द प्राइसेस अ लिटिल लो ऑल्सो, ऑनटोरिप डिस्काउंट इज देते हैं वहां Yeah. पे। वर्किंग वेल बिकॉज द प्राइसेस आर रीजनेबल। या वहीं सौ सौ फेयर पीस में का घुसने हजार के लिए रुपए आपको कोई बेचेंगे। खर्चा नहीं करना पड़ता है। कॉमिक कॉन में घुसने के लिए आपको तो वहां पे 300 हजार 400 का टिकट खरीदना Correct. पड़ता है। नहीं नहीं, हजार का टिकट है। 1000 हजार का का हो टिकट, गया है अभी। 1000 का Yeah. टिकट देके आप क्यों जाओगे वहां पे? आप कितने लोगों के पास And इतना डिस्पोजेबल इनकम है वेस्ट बंगाल में? खाने का पैसा नहीं है लोगों के पास, सब नहीं, उधर एक चिल्ला रहे बर्गर हैं। का भी 500 रुपए देना पड़ेगा कॉमिक कॉन में हाँ, जाके। एवरीथिंग और इज वहाँ पर सुपर प्राइस। now they started this trend of Water you have to buy. 50 रुपए का मनीष पानी मनीष ने जो देखा है, वहां पे, दैट इज नॉट द केस। मतलब मैंने भी देखा है कि दिल्ली, बॉम्बे या ये सब जगह पे सेल्स अच्छा होता है, लोग खरीदते हैं। अब होलिका का पूरा बिजनेस ही ये मॉडल के ऊपर चलता है बस। वो लोग कॉमिकॉन में जाते हैं, विवेक गोयल कॉमिकॉन में जाते हैं, ही गोज टू द कॉमिकॉन, ही सेल्स कॉमिक्स ओवर देयर। साल में 5 6 7 जितना भी कॉमिकॉन होता है, ही गोज ओवर देयर। जितना भी जो भी जितना उसका मेजोरिटी सेल्स कॉमिकॉन में ही होता है। बाकी साल तो वो वैसा बेटर रहता है। that is the thing. They will market it then when Comic Con is there, and there will be some awareness. But like now, Black Sheep Comics is there. I like the Technicolor lovers a lot, and I think even both of them who have read it, they love it because I felt first book के लिए whatever efforts they've put for story and for the artwork, it's brilliant. But they're saying they'll bring out the next part this year. Now I am following up. I am keen to know. I am one reader. I will know it. But majority people, it's been so long. Like you said, they're not publicizing it. The same content again and again. There is a lot of gap. People will obviously forget.
So that is another big problem. Is there has to be, like what you said, one for distribution and one for marketing. Two individual teams have to be there for each company that are solely focused only on this. Otherwise, it will keep dying very fast. Maybe 5 years is the best case scenario. देखो ईच कंपनी के लिए ना दो टीम ऐसे हो नहीं सकता बिकॉज बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग ऑन सच लो रिसोर्सेज what I am asking of is like I guess like, it's not possible. There should be one company who is only interested in the business. कि भाई मुझे जितने भी पब्लिशर से उन लोगों से मेरे को बुक्स लेना है उन लोगों को ये बुक बेचना है. प्रमोशनल जो भी है these companies will help me, but it is my responsibility to like to logistics का जो है आपका मार्केट में बुक्स डालने का जो है that will be my responsibility and I will give them a fair price. Yeah. तो ये अगर ये चीज बल्क में करना पड़ेगा. ये ऐसा नहीं कि हर कंपनी छोटा 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 कोशिश कर रहा है. इट कांट हैपन इन piecemeal. यू हैव टू डू इट इन बल्क. जितने भी कंपनीज है जितना भी बुक्स है सबसे आप 25-30-100 कॉपीज ले लो एक साथ और उसको प्रमोट करते रहो. एवरी डे पुट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, पुट समथिंग, ट्राई टू मेक इंडियन कॉमिक्स मोर ट्रेंडिंग. तो ये एक दैट इज समथिंग a different entity will have to take care of. ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है because we are like running from post to post trying to like get resources. ये आर्टिस्ट को इतना पैसा देना है, राइटर को देना है, ये करना है, वो करना है, रिटर्न्स क्या हो रहा है वो देखो. ये सब चीजें करके तो मुश्किल हो जाता है ना. अभी हम सेल्स के लिए भी कहाँ कहाँ भागेंगे. Yeah. We can't run True. pillar to post for sales. There should be somebody, there should be a body which will be take care. ऐसे पहले क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, व्हीलर था, ये लोग थे. तो Yeah. ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन अभी एक डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए हम लोग. Correct. पहले जो व्हीलर आईबीएच जो करता था, जो स्टेशन में बेचता था या बुक हाँ. स्टोर्स में बेचता था या मैगजीन स्टॉल्स में बेचता था, अब ऑनलाइन में ऐसा कोई चाहिए जो who will sell the content. And Yeah. Amazon is not going to do that. Amazon और ये फ्लिपकार्ट ये लोग नहीं करने वाले हैं. Yeah. वो लोग उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स बेच के ज्यादा पैसा आता है. You Correct. can live Correct. over there, but they won't push it to the audience. Yeah. अगर प्रॉफिटेबल भी रखना है ना, आई थिंक B2C इज द राइट डायरेक्शन. B2B से अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा. And इसमें पैसा है मुझे लगता है because at the end of the day we like to read stories. We like stories at the end of the day. All of us are passionate about stories and we want to know new stuff. We want to read new stuff. And ऐसा नहीं है कि हम लोग को सिर्फ इंटरनेशनल चीजें ही चाहिए. Like if it's great content, like technical lovers हुआ, फिर village हुआ, all of these kind of books are something which we love. And वो नया topic रहता है. It's something which is Indian and at the same time it's new. So Yeah. there is an audience, but शायद इतना बड़ा audience नहीं है. पर वो कल्टिवेट करने के लिए व्हाट यू सेड ना, वो चाहिए. यू नीड दैट मार्केटिंग पुश. जोरों का ऑडियंस हर तगड़ा चीज के मार्केटिंग लिए पुश चाहिए. 120 करोड़ का देश है यहाँ पे. 120 करोड़ में क्या 1 लाख ऑडियंस नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता है. आराम Yeah. से. आराम से 1 लाख तो बहुत ही कम बोला. बेसिकली आई एम श्योर मैं 10 मिनिमम बोल लाख रहा हूँ. के 1 लोग लाख तो में होंगे. हाँ, उतना लेकिन तो 1 लाख को होगा पता ही. नहीं कि हाँ, है. दैट इज द थिंग. पर वो है. पर आप अवेयरनेस इज द इनका प्रॉब्लम. हरकत भी देखो ना. अगर कोई सपोज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ वेरी इजी वे टू मूव फॉरवर्ड विथ, बट वहीं अगर कोई दो क्रिटिसिज्म दे दे, चाहे कितना भी कंस्ट्रक्टिव क्यों ना हो, पब्लिशर मुंह फुला लेता है कभी कभी. तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया आया हूँ ये सब चीजें. तो ग्रोथ नहीं हो रहा है ना. इट्स मेजरली ऑन द वे देयर माइंड वर्क्स. दे आर नॉट वेरी ओपन माइंडेड कि हाँ भाई एक्सेप्ट करेंगे, या लेट्स एग्रेसिवली चेंज पुश करेंगे. इट, लेट्स ट्राई डूइंग इट. नो, दे विल रेदर लुक डाउन अपॉन. ये तो गलत है. ये तो आई हैव ऑलवेज सेड दैट ये कोई अगर इन्फ्लुएंसर या कोई भी अगर कुछ अगर आपको लेके अगर बातचीत भी कर रहा है, इफ इट्स क्रिएटिंग अ कन्वर्सेशन, दैट इज गुड फॉर यू. अच्छा बुरा जो भी बोले, ठीक है. करेक्ट. करेक्ट. अगर या अगर वो लेना ही छोड़ दे इसके बाद, आप उसके साथ लड़ाड़ा किया, आप उसके साथ उसके झगड़ा किया, जो भी किया, उसके बाद इफ ही जस्ट सेज दैट नो आई वोंट रिव्यू योर बुक, यू आर गॉन. हो गया ना. तो True. ठीक है, अगर बुरा है तो ठीक है, यू टेल हिम दैट अगली बार कोशिश करूंगा बेटर करने की. दैट्स इट यार. ओए, इट्स दैट इजी. और कोई अगर अपना वक्त निकाल के बोल भी रहा है ना, तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा है, तुम्हारा बुराई करके उसका हाँ. क्या फायदा है.
और वो दिखा रहा है कि आपका यहाँ पे आर्टवर्क का गड़बड़ है, जो भी है। तो आप वहां पे एक रिप्लाई दे सकते हो कि ठीक है, हमारा ये प्रॉब्लम्स था, इसीलिए हम लोग कर नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू डू बेटर। हो गया ना आपका, और क्या। जैसे नियर मिंट कंडीशन, ये सब बड़े बड़े चैनल्स जो है, उनको बरोबर रिव्यू कॉपी मिलता है, एंड इट्स नॉट लाइक कि दे गो गागा ओवर इट, दे ऑलवेज हाईलाइट द पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। मार्वल डीसी का आज तक निकालते हैं कि भाई इसमें गटर लॉस का इशू है, इसमें ये है। कभी मैं नहीं सुना नियर मिंट कंडीशन वाले, वो दैट गाइस नेम इज अनकैनी उमर, सेइंग कि नहीं भाई मार्वल वालों ने मुंह फुला लिया है, लास्ट वीडियो में ये बोल दिया था, अब से वो लोग भेजना बंद कर दिया। नथिंग लाइक दैट। वो मार्वल भी बड़ा है, वो चैनल भी बड़ा है, हम लोग इधर छोटे हैं, बट आपस में काम करना नहीं सीखे हैं। मैं तो किसी के साथ कभी, मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स जो भी अभी वीडियोस बनाते हैं, आई ट्राई टू कीप गुड रिलेशन विद एवरीवन। देयर आर वन और टू माय, मतलब पता नहीं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, एनीवे, बट नहीं नहीं, कुछ ज्यादातर लोग लोगों तो के साथ आई जानबूझकर ट्राई टू। जरूरत से ज्यादा नेगेटिविटी कलकेट करते हैं, बट मेजॉरिटी इज नॉट लाइक दैट। एंड इट्स वेरी इजी है, मतलब कोशिश करोगे यू कैन create some sort of a bridge or a middle ground. And the reason why I have deviated a little from this Indian comics, पहले overly focus करता था, but then I saw कि it's kind of thankless. And I'm like कि भाई ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, ये लोग they are not in that right mindset, तो why वन साइडेड क्यों रहे एफर्ट्स। इसलिए थोड़ा बहुत शॉर्ट्स पर फोकस किया हूँ, एंड चैनल इज डूइंग बेटर देन एवर। Does not mean कि I have abandoned Indian comics, because deep down I'm still passionate about this medium and homegrown content in general. But हाँ, पहले जितना एनर्जी और एफर्ट और टाइम देता था, अभी उससे कंसिडरेबली कम देता हूँ। विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द पब्लिशर्स, बिकॉज लाइक जैसे मनीष है, जैसे सौम्या है। सौम्या तो यार बहुत कोशिश करता है, ये बहुत, ये तो ही ऑलवेज गिव्स हिज बेस्ट। तो ऐसे लोग, दे आर एसेट्स, एंड द पब्लिशर्स दे शुड लाइक ट्रीट देम एज एसेट्स। बिल्कुल, अभी वहीं पब्लिशर्स क्रिएटर्स के साथ काम करता हूँ जिनको फीडबैक से प्रॉब्लम नहीं है, जिनको मेरा रिव्यू से इशू नहीं है, उनके साथ इट्स स्टिल देयर, लाइक द बॉन्ड इज स्टिल देयर। बट जिनको तकलीफ होता रहता था, उनको गुड बाय कर दिया। देखते हैं क्या होता है आगे। प्रॉब्लम यही है यार, एक जो वो जो एक सब लोग मिलके जो काम करने का जो that, वो जुनून अभी है ही नहीं, सब अपने अपने हिसाब से बैठे हो। Yeah. मैंने भी अभी देख लिया कि नेशनल मार्केट में तो यार 100-150 बुक बेचना मुश्किल हो जाता है। वहां पे मैं बंगाली में मैं एक साल में 1000 बुक बेच रहा हूँ। तो ठीक है यार, अगर मैं रॉयल्टी के हिसाब से भी काम करूँ यहाँ पे तो मुझे फायदा ही है, लाइफ लॉन्ग मेरा चलेगा। Correct. जितना भी बुक्स एंड बेचे ऑफ द डे वही नंबर से मैटर करता है सबसे ज्यादा। So at नंबर the अगर end of ठीक it, है तो मैं, sales are important. It's very important. हिंदी मार्केट तो सबसे घटिया है, मैं एक चीज बता रहा हूँ। हिंदी मार्केट इज द वर्स्ट। ये यूनानिमसली बहुत सारे पब्लिशर्स सेम स्टेटमेंट ही देंगे। एंड दिस हिंदी रीडर्स, दे हैव dug their own grave. They have destroyed their even I feel bad for Raj Comics also. एक तो वो भाई लोगों में झगड़ा हो गया, कंपनी तीन टुकड़ा हो गया। तो दूसरा, Correct. आई फील दैट लाइक देयर फैन बेस इज आल्सो सो टॉक्सिक। हर चीज में इन लोग कुछ ना कुछ कटाक्ष करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो मतलब भाषण चलता ही है वहां पे। There's one question जो like हम लोग ने we had said that we will be getting Shamik Dasgupta, तो एक क्वेश्चन आया था कि what is who are your favorite writers and artists? मेरा सबसे फेवरेट राइटर है स्टीफन Okay, किंग। king of I horror. have, yeah, I have not just horror. The way I think he has been bracketed as a horror writer, but he's not. He's a Yeah, great writer. The way he gets into the mind of his characters, the way he explains every situation. Like I'm talking about prime Stephen King, like Eat, Carrie, like Needful Things, that era. yeah. Yeah, he inspired me a lot. Second was Neil Gaiman. Neil Yeah. Gaiman, I found Neil Gaiman when I was working in Virgin Comics that time. तो वहाँ पे पूरा collection था Sandman का. पहले I was हाँ. not very interested. Then I started reading it. It was so beautiful. It was like, since I'm a student of literature, the literary content in the richness of literature is so, like so overwhelming in that series. Beautiful work.
And then obviously my most important influence has been Mark Miller. Okay. Mark Miller has been, like, because the way he tells cinematic stories, the Hmm. way he always infuses and he gives shock values and all these things. So Mark Miller has also been my very important, one of my most important influences. So yeah, these three artists तो बहुत सारे हैं यार, किसको छोड़ के किसका नाम लूं अभी, कहाँ से स्टार्ट करूं अभी. Most of them you can say, starting from like the old masters like Jack Kirby, Steve Buscema, and all these guys, then coming down to Jamie Lee, like Francis Manapul. And अभी तो मैं अभी देखता नहीं अभी. Nowadays I don't read too many comics. Yeah. तो है जो जो क्लासिक जो है, एलेक्स रॉस वगैरह जो भी है, Hmm. yeah, they are, like, I really used to love this guy called Norm Breyfogle, who used to draw Batman in the 90s, in the early 90s. Because most of the comics that I had collected from that era, जब मैं हाँ. स्कूल कॉलेज में था तो वो टाइम पे he used to draw Batman. तो Yeah. वहाँ पे तो मतलब इंडिया में बहुत कम मिलता था, पर मिलता था यहाँ पे. So I used to Hmm. collect them, and most of them was drawn by Norm Breyfogle. Beautiful artwork, very Lot interesting. of detective comics, Batman, Detective Arkham. comics and Batman. I think Jim Aparo के बाद he took over Ah, Jim the Aparo, artist. Norm Breyfogle. Yeah. So I think, do you know Shubhradeep Das? He is also a big collector. Like you Okay. said, you are a collector. No, I think he's the Yeah. biggest collector in Calcutta. तो मनीष ने एक बार उनके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, showing his collection and everything. He Okay. also has He all is the more old popularly known as Pikuda. people. You can check out the So video, it's there on my channel. It's a pretty yeah, long yeah, video, but you can see his entertaining collection. nonetheless. Huge. It's huge. So yeah, these are the guys. These are the guys who has influenced me. आर्टवर्क और राइटिंग में मैं इन तीनों का नाम तो मैं पहले ही लेना चाहता हूँ. स्टीफन Hmm. किंग, नील गेमन एंड मार्क मिलर. I think this was like one of the more free-flowing conversations that we have. I mean, normally when we have invite guests, we have a very free-flowing conversation, but we generally have a structure. I think इस बार structure की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम तो free-flowing conversation में ही सब कुछ cover कर लिया है इस बार. फ्री गोइंग में Hmm. बेटर रहता है. स्ट्रक्चर करके क्वेश्चन आंसर करना बहुत वो, आई डोंट लाइक दैट फॉर्मेट. जैसे जैसे टॉपिक्स आता है वैसे वैसे डिस्कस करो. नहीं, और ये सब I have made टॉपिक्स a bunch of ऑलरेडी डिस्कस हो videos चुका with है. From heart. शमिक दा के साथ जितना बार वीडियो किया हूँ स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो पाता, ये फ्री फ्लो हो जाता है ऑटोमेटिक. No, दिल दिल से. दिल से. मैं तो भाई दिल से ही काम करता हूँ, इसीलिए 22 साल हो गए, 22-23 साल हो गए, अभी भी हूँ यहाँ पे. Correct. मेरे मेरे जितने भी पीयर्स हैं सब सब चले गए, कोई नहीं है, मैं सिर्फ बचा हूँ. So Cool. Thank you so much. thank you so much for joining us थैंक यू here गाइस, with थैंक यू फॉर हैविंग and मी. गुड नाइट. yes. Hopefully we connect again, and of course all these people's links are in the description below to follow their channels and to stay updated for their content, and we look Of forward course. to their projects as well as it gets released. Yeah, sure. One of those is coming very soon. Great. Maybe we'll catch up then again for a second round. Of course, of course. Take care, guys. Cool. Take care. See you.